Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all doing good. Welcome back to another lecture. Today we will discuss a topic from first year, chapter number 1, and the name of the topic is dimensions. डायमेंशंस का टॉपिक अक्सर स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि ये ईटैम डीकैट के एमसीक्यूज़ में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है टॉपिक। इसमें कुछ मेजर स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं एंड सम ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड देयर आर फ्यू ट्रिक्स विच विल बी गिवन टू यू एट द लास्ट बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाज़ औक़ात आसानी ढूंढना शुरू कर देते हैं कि हमें कुछ ईजी और बहुत ही ज़्यादा ट्रिक्स एंड टिप्स से समझाया जाए, बट वो भी हम देखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट जस्ट डिस्कस द टॉपिक इन इन अ बबल चार्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो डायमेंशंस का जो बबल चार्ट है इट डिस्क्राइब्स यू सो वेल कि आपको उनके स्टेप्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग करने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप देख सकते हैं कि इट विल बिकम ईजी फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डेफिनेशन. Second of all, we have the step number 1, that is a proper formula of any quantity. Step number 2, if any constants are there in the formula, avoid them. Number 3, put the desired units of the equation. Number 4, this MLT is a trick kind of a thing which will be guided you earlier. Dimensionally correct equation. What is our dimensionally correct equation? We will discuss it later in the video. Now let's just quickly go through the topic. Why we use dimension? Dimension हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? अगर आप dimension का word डेली लाइफ में सुनते रहे हो तो dimension से मुराद या dimensions की जो हम अपनी तरफ से definition बना सकते हैं एज ए स्टूडेंट, वो ये होता है कि एक चीज़ किस हद तक डायरेक्शंस को फॉलो कर रही है। मीन्स आवर अर्थ इज़ इन 2 डायमेंशनल स्पेस, तो एक्स और वाई को फॉलो करती है हमारी अर्थ। तो डायमेंशंस कुछ ना कुछ वर्ड हम अपने माइंड में एज ए डेली लाइफ रूटीन हम सुनते रहते हैं कि अ वास्ट डायमेंशनल पर्सन, ये चीज़ बहुत ज़्यादा डायमेंशनली वाइड है, तो यू हैव द आइडिया। लेकिन फिज़िक्स के अंदर डायमेंशंस हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को क्यों दे सकते हैं, इसकी वजह एक तो आपको पता है कि फिजिक्स में 2 किस्म के यूनिट्स होते हैं, एक होते हैं बेस और एक होते हैं डिराइव्ड। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स के अंदर, बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं, तो कौन सी बेस क्वांटिटीज़ की मदद से हमने ड्राइव क्वांटिटीज़ बनाई हुई हैं और उनमें कौन सी बेस क्वांटिटीज़ शामिल होंगी, या उस फिज़िकल क्वांटिटी की रेंज कितनी है डायमेंशनली। तो इस चीज़ की नो हाउ के लिए हमें जो चीज़ फिज़िक्स ने दी है that is very much important in terms of any physical quantity, that is known as dimensions. So you have the definition. It describes the fundamental physical properties. Fundamentals, you know that the fundamental blocks which are the basic building blocks of physics. So nature of any quantity, nature means on which base quantities it is dependent, like length, mass, time. Although there are 7 basic quantities, base quantities, you know, in physics: length, mass, time, temperature, luminous intensity, current, moles, that is, and current also. So we are using base quantities to define the derived quantities as well. So dimensions helps us to know the exact parameters and physical dimensions of any quantity. Let us just go through with an example. Uh, there are some of the points you should remember during the dimensions. That dimension is only possible for the physical quantities. And now what is the difference between physical and non-physical quantities? Physical quantities are those which can be measured. जो measure की जा सकती हैं वो physical होती हैं. For example, your weight. Your weight is almost 50 Newton, 55 Newton, 60. Your mass is 45 kg, 40 kg, 50 kg. So these are measurable quantities like your height, time, etc. But there are some quantities which are not measurable, like emotions, hate, love. आप किसी से कितना प्यार करते हैं, किसी से कितनी नफरत है आपको, तो we cannot measure that. So you are getting my point. Non-physical quantities, or those quantities which have no proper unit, we are not consider them in dimensions.
So dimensions are only possible for the physical quantities. So let us just consider a physical quantity, that is kinetic energy. You all know that is a very famous kind of a topic in physics in 9th, 10th, first year, second year. It has a proper formula. And what is the formula for kinetic energy? You already know, half mv square. What is m? That is mass, and v is the velocity. Another key point of calculating dimension is that you must know the units. As in ninth grade and 10th grade, we are focusing on units. So if a person doesn't know about the units, he or she cannot do dimensions accurately. So you have to gather knowledge about the units, and it is just a practice and your memory. सम स्टूडेंट्स आर सो शार्प कि वो जल्दी से यूनिट्स को अपने माइंड में सेव कर लेते हैं. अगर आपको सेव नहीं हो रहा तो हम किसी भी फार्मूला से उसकी यूनिट बना भी सकते हैं. So it is easy to just remember the name and symbols of the units. So it is very important in dimensions. Now we have the step number one, we have the formula, that is half mv square. Now we have the step number two. You are seeing a constant here, that is 1 by 2. This is a constant value, so we can avoid it. So what will be the formula become? That is mv square only. Why we are not considering constants? Because constants has no units, so that's why they are not considered in dimensions. Step number three, now we have the proper number of units, the desired units of the quantities, as kg. Kg means kilogram. Kilogram is for mass in SI units. Remember this also, that we are following the SI system of units in physics. So this is the unit of velocity, that is meter per second. But if you see, velocity has a square in its formula. It is not necessary that you always put square, but the formula demands कि यहाँ पर square है तो आपने मीटर पर सेकंड के साथ होल स्क्वायर यूज करना है. नाउ kg इज देयर, इनको सेपरेट ब्रैकेट्स में रखना है आपने. मीटर पर भी स्क्वायर और सेकंड पर भी स्क्वायर, दीज बोथ आर नाउ स्क्वायर. अब kg मीटर स्क्वायर अलग और सेकंड, अब देखिए ये डिवाइड में है. व्हेन वी शिफ्ट इट ऑन द नोमिनेटर, दिस पावर +2 बिकम्स -2. ये मैथमेटिकल रूल है. किसी भी चीज को डिवाइड से उठा के आप नोमिनेटर में लेके जाएंगे, मींस डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएंगे, तो उसकी पावर जो होगी वो प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में ऑपोजिटली चेंज हो जाएगी. आई थिंक यू नो दिस. सो दिस विल नाउ बिकम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू kg m2s-2. इट इज क्लियर. स्टेप नंबर 4 is very simple. MLT. Always remember, in first year there will always be dimensions ending upon MLT. What is M? Mass. What is L? Length. And what is T? Time. So M represents kg, meter represents length, and second represents time. So MLT. Now look at the powers on kg m2s-2. kg mass, kg पर कोई पावर नहीं है तो एज इट इज m आ जाएगा. मीटर स्क्वायर है, मीटर रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, तो लेंथ पर स्क्वायर आ जाएगा बिकॉज मीटर पर स्क्वायर था. टाइम, सेकंड जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड पर क्या पड़ा हुआ था? पावर -2. सो दैट विल बी -2. अगर आपको सिंपल क्वेश्चन दिया जाता है, फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ दिस क्वांटिटी, तो दैट इज इट. MLT and the relevant powers, this is it. You got 4 marks for dimensions or 2 marks, anything you can say. अगर ये MCQ आता है तो it will be, अगर ये EMT catch है तो it will be +2 or +1. But in short questions it is 4 marks question. Now there is another thing जो कभी कभार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि दैट काइनेटिक एनर्जी इज अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन और नॉट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइंडिंग द डायमेंशंस एंड डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन. डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए किसी भी क्वांटिटी का राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आना ही चाहिए. लाइक यहां पर हमारे पास अगर हम देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर क्या है, राइट हैंड साइड पर है काइनेटिक एनर्जी एंड लेफ्ट हैंड साइड पर है हाफ mv स्क्वायर. एज यू नो, हाफ mv स्क्वायर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज ml2t-2. ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी. इफ आई शो यू this is and this side we have already discussed. So left hand side is equal to ml2t-2. Now we have the right hand side. If you know
the SI unit of energy, any energy, so it will be joule, and joule means force into displacement. This is a topic in ninth we have in sixth chapter, work, joule, and in first year we have the fourth chapter, work and energy. So joule is represented by force into displacement. So F dot D, joule is F dot D. So at right hand side we have kinetic energy and it is equal to joule and it is equal to F dot D. So technically right hand side जो है वो F dot D के बराबर है. अब F क्या है? It is a force, and you know Newton's second law of motion that F is equal to ma. आप F की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, F is equal to ma and D की जगह D. नाउ यू हैव द स्टेप इन माइंड कि हमने डिजायर यूनिट्स पुट करनी है. m mass, kg acceleration, that is meter per second square, and displacement d, that will be meter. आपने हर एक क्वांटिटी को अलग अलग ब्रैकेट्स में उसका यूनिट पुट करना है. नाउ सी, देयर आर few similar number of units like m and m, meter into meter. अगर आपकी बेसिस सेम होती है तो पावर विल बी एडेड अप इन मैथमेटिक्स रूल. सो दीज आर द बेसिस एम एम, और इनके ऊपर अभी पावर नजर नहीं आ रही हैं लेकिन वन वन तो है. सो एम और एम दोनों की पावर्स ऐड होकर क्या बन जाएंगी? एम स्क्वेयर. केजी आपको कोई और नजर आ रहा है? नो, केजी विल बी सिंगल. m and m square, or this is in divide, as I told you. When it will be in numerator it will become s minus 2. So what we have? kg m2 s minus 2. Look at this, this is the same dimension that we give up on the left hand side, that is ml2t minus 2. What will be the conclusion of this equation? That it is proved that left hand side is equal to right hand side. It means kinetic energy is a perfectly dimensionally correct equation. So I hope that you are getting my point. You can take any formula in physics in any kind of units and you can prove the dimensions, and you can also prove the dimensionally correct equation. There is a slight you can say easy kind of a question in the first year exercise question, conceptual question, that every equation is dimensionally correct equation or right equation or not. No, not every equation in physics. There are a few things or few quantities which are not dimensionally correct equations, like this left hand side is not equal to right hand side. I will give you that examples in upcoming video inshallah. So today we have a very important conceptual question which is continuously repeated 3 to 4 years in board exams, so that is important. And that is, what are the dimensions of gravitational constant? You know what is gravitational constant. In ninth we have studied the fifth chapter, that is gravitational, about the gravitational constant. Gravitation chapter का नाम था Newton law of gravitation, that is F is equal to gm1 m2 divided by r square. आपको ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर फार्मूला हर दफ़ा दिया गया हो, तो you have to understand and you have to remember the proper formulas of the topics. So you can see there are two masses m1 m2 and r. What is r? R is the distance. So we have to shift the values. हमने एक previous topic में ये सीखा था कि shifting कैसे की जाती है. If you see, we have to find out the dimension of this g, capital G. So इस g के लिए shifting कैसे करेंगे? ये r यहाँ पर क्या हो रहा है? Divide, उधर जाके क्या हो जाएगा? Multiply. और ये m जो m1 m2 है ये यहाँ नोमिनेटर में है, यहाँ डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, तो g हमारा जो है वो सेपरेट हो जाएगा. शिफ्टिंग करनी बहुत जरूरी है डायमेंशन के लिए. नाउ द फार्मूला बिकम्स g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2. पुट द डिजायर यूनिट्स. यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि स्टेप्स मैं वहां पर समझा चुका हूँ. सो यू कैन कैरी ऑन विद मी. F means Newton और F is equal to ma. Directly put the units. kg m s minus 2. वो m जो नीचे था s2 वाला, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ. ये मैंने f का यूनिट ऑलरेडी पुट किया हुआ है, तो मैं इस चीज को कैरी ऑन कर रहा हूँ. kg m डिवाइडेड बाय s2 था, तो मैं इसको ऊपर लेके जाके s minus 2 ऑलरेडी कर चुका हूँ. ये एडवांस एक स्टेप है. नाउ दिस m
दिस रिप्रेजेंटिंग, देखिए एफ का यूनिट यहां तक था के जी एम एस माइनस टू. नाउ दिस आर, आर इज डिस्टेंस, डिस्टेंस becomes in meter, it is calculated in meter. So m2, because it has a square, so there are two masses kg into kg, but we are not just adding the powers, because there is a kg in the numerator and there is a kg in denominator. They will be cancelled out with each other, so it will be easy. Now you see kg and kg, they are cancelled out. What will be the net result? M and this m, bases are same, power will add. This contains power 1, this contains power 2, this will become m3. नाउ दिस डिनोमिनेटर kg, ये जो नीचे kg है, जब इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, आपको पता है जब कुछ पावर नहीं होती तो 1 होती है, नीचे ये +1 है, जब इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1, बिकॉज ऊपर अब कोई kg बचा नहीं, कैंसिल आउट हो गया. नीचे जो kg है डिनोमिनेटर में, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? kg -1. So this meter becomes meter cube and s minus 2. We totally separate them. So kg m s minus 2, आखिर में क्या आ जाएगा? मैंने आपको कहा था mlt. So m -1, meter length 3, so this will be 3, and s minus 2. These are the dimensions of gravitational constant. Now I am discussing at the start that I will tell you some of the tricks that we should remember in dimension. So these are the tricks. ऑलवेज रिमेंबर, आखिर में एम एल टी ही आएगा. एम एल टी हर डायमेंशन के आखिर में आएगा इन फर्स्ट ईयर. सो वी हैव टू जस्ट पुट द डिजायर्ड वैल्यूज इन पावर ऑफ 10, सो दैट विल बी इजी फॉर यू. एम एल टी इज ऑलवेज देयर एट द लास्ट. फोर्स जब भी नजर आए आपको, फोर्स का मतलब है न्यूटन, तो न्यूटन आपको पता है कि वो डायरेक्टली एम में होगा, एफ इज इक्वल टू एम में. तो आप याद रख लें के जी एम एस माइनस टू, के जी एम एस माइनस टू हमेशा न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा. और अगर जाउल आ जाता है तो जाउल में आप कर लेंगे के जी एम टू एस माइनस टू. दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, आप इसे याद रख सकते हैं टू सेव योर टाइम. और लास्ट में हमेशा याद रखें, मैथमेटिक्स का बड़ा कॉमन रूल, बेसिस आर सेम, पावर विल ऐड. सब्जेक्ट भी हो सकती है अगर साइन चेंज हो तो. ये कुछ टिप्स थी और ये कुछ हमारा लेसन था. आई विल अपलोड सम ऑफ द एग्जांपल्स एट द लास्ट. होप यू लाइक इट एंड यू लर्न सम ऑफ इट. थैंक यू सो मच.